पॉलिसीज है जो निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर क्लस्टर के निर्माण की कार्रवाई, कई प्रस्ताव हमारे पास डाटा सेंटर स्थापित करने के प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एक सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई है। इन सभी सेक्टर्स में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और आप सब के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का एमएसएमई का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है, वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। ये 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर को
अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी एमएसएमई यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी से मुक्त किया जाता है और वे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करती हैं। 1000 दिनों के अंदर वे अपनी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेती हैं। लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता, उनको कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हां, गवर्नमेंट के स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं और गवर्नमेंट के स्तर पर उनको दिए जाने वाले इन सहयोग के क्रम में हम उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट के साथ और एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने में उन्हें अपना भरपूर मदद भी उपलब्ध करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है, उस माहौल का लाभ लेने के लिए मैं आज आप सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं। सिंगल विंडो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए निवेश मित्र, निवेश सारथी, निवेश मित्र के माध्यम से हम लोगों ने कोई भी एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के साथ होता है, निवेश मित्र उसके माध्यम से सीएम फेलोज सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करके निवेशक को फॉलोअप के माध्यम से सारी औपचारिकताओं को एक समय सीमा के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाता है। निवेश सारथी उस निवेश को प्रभावी ढंग से निवेश कराने में योगदान देता है। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश सफलतापूर्वक हो गया है, तो सफलतापूर्वक हुए उस निवेश को गवर्नमेंट के स्तर पर जो भी इंसेंटिव संबंधित इन्वेस्टर को उपलब्ध करवाए जाने हैं, इस समय से उपलब्ध कराने वाले अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आज के दिन पर वहां पर जाना जा रहा है। हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करने के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जापान के आप सभी बिजनेस लीडर के साथ यहां पर संवाद बनाने के लिए आज हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा की है। अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज टीम यूपी आपके बीच में आई है, आपका आह्वान करती है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला आपका प्रत्येक निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आपके लिए भी वह निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा और
आपके एक उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज यहां पे बिजनेस लीडर्स एक साथ जापान की राजधानी की टोक्यो में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए भारत की जापान में एम्बेसडर सुश्री नगमा मलिक जी को, उनकी पूरी टीम को, भारत जापान बिजनेस कोऑर्डिनेशन से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के इन निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश की यात्रा के लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आएं और बिजनेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थलों को एक बार आप अवलोकन करें, उन्हें देखें और उनमें भविष्य की उन संभावनाओं को भी टटोलें जो आपके सुरक्षित निवेश के लिए एक उत्तम स्थल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद योगी जी। Now we will conclude the event on Celebrate India-Japan Next Generation Partnership Focus Uttar Pradesh Today。以上をもちまして本日のイベント日印次世代パートナーシップウッタルプラデーシュを終了とさせていただきます。Thank you very much for your participation today. ご会場の皆様、着席になってお待ちくださいませ。For those the participants may kindly be seated. Please kindly be seated on your seat. ご着席になってお待ちくださいませ。Good evening to the dignitaries on the dais, distinguished guests, industry leaders, members of the India-Singapore business community. It is my privilege to welcome you all to the Investor Roadshow of the Government of Uttar Pradesh, being organized as part of the Honorable Chief Minister's visit to Singapore. This event is being organized by Invest UP of the Government of Uttar Pradesh, along with the High Commission of India, and we have the Singapore Business Federation and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, as our business partners for the event. Ladies and gentlemen, once again, a warm welcome to the Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath, the Minister for Finance in the Government of Uttar Pradesh, the Honorable Minister for Infrastructure and Industry Development, the High Commissioner, His Excellency, and the senior officials from the State Government of Uttar Pradesh. We welcome you all for this event. In the interest of time, we will start with the event right away. I would like to invite the High Commissioner of India to Singapore, Shri across an array of sectors, namely global capability centers, automobile, EVs, AI, IT, ITES, semiconductor, electronics manufacturing, green hydrogen, food processing, tourism, and data centers. These strategic initiatives are further strengthened by the state's industrial investment and employment promotion policy. Uttar Pradesh offers one of India's strongest multimodal advantages. The state now boasts of the largest expressway network in the country, with 7 operational and 15 upcoming expressways, along with 19 domestic and 5 international airports, an extensive rail network spanning nearly 9,000 kilometers across 5 railway zones, access to the National Inland Waterway connecting the state to major ports,
And located at the crossroads of national freight corridors, Uttar Pradesh offers seamless national and global access. The state's leadership deeply respects the investors' work ethics and punctuality. It is this very commitment to efficiency and reliability that has enabled Uttar Pradesh to be ranked as the #1 state in the ease of doing business, driven by decisive reforms and digital-first governance. At the core of this transformation is Nivesh Mitra, the state's single-window investment platform, delivering over 500 integrated services to more than 1.9 million users. The confidence of the investor is further strengthened by 115 dedicated Udyami Mitras, providing end-to-end hand-holding, 5 sector-focused desks and 8+ country desks supporting international investors. Uttar Pradesh also has a clear demographic advantage in the country and is powered by India's largest and youngest talent pools, and supported by a strong ecosystem of premium technical institutions, universities and skill development centers. This isn't potential. It's performance, scaling with speed. Invest in Uttar Pradesh. Come, partner with India's growth engine. I believe the words lead, build, and deliver capture the essence of the transformation that has happened in Uttar Pradesh. To delve deeper into the roadmap, the focus sectors, and the investment opportunities in the government of Uttar Pradesh, I invite Shri Deepak Kumar, the Infrastructure and Industrial Development Commissioner of the government of Uttar Pradesh, to deliver his presentation. Thank you. Good evening, everyone. On behalf of our Honorable Chief Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Minister for Industries, and the whole UP delegation, I welcome you all. It is indeed a privilege to welcome such a illustrious gathering. I'll take you through a very short presentation on what UP has done, and we will show you what all potential is there. So we have, population-wise, we have 250 million, almost, if it was a country, 5th largest country. Land area of 243,000 square kilometers. Economy, $350 billion US, our GSDP. And the population, it's the largest consumer base. We constitute 17% of the national population. 56% of it is young, providing you the opportunity to skill them as you want them. And we have excellent connectivity, be it roads, expressways, or airports. We have 16 operational airports. 4 of them are international. One, the largest in Southeast Asia, is coming up at Jewar. It will be operational from next month. 55% of India's expressway is in Uttar Pradesh. Why Uttar Pradesh is the next global industrial engine? We are an export hub, 26.10 billion Singapore dollars. The merchandise export, this is the figure in 23-24. It has seen a 102% rise in last 7 years. We have a very robust MSME sector. 70% of the state's total merchandise exports is from this sector. 9.6 million registrations are there in MSME. 55% of mobile phones are manufactured in UP. This is the national figure, 55% of the phones that are being manufactured. And data center 644 megawatts capacity is right now existing there in Uttar Pradesh. And if you see the graph on the right, the growth has been phenomenal. We have grown, post-COVID, we have grown at 16%, while the national average is 14%. So we are already accelerating ahead of the national average. And from 16, 17 to right now in last 8 years, the growth has been 2.2 times. This is our GSDP.
You can see the average growth rate, and post-COVID, as I said, it is 16%. We are ranked second in export preparedness index. We have 75 export clusters. Each district has a ODOP, one district, one product scheme. Of the two states, UP is one, which has a defense corridor, and we have 6 nodes. We will be explaining that further. We have 27 IMLCs, Integrated Manufacturing and Logistic Centers, clusters. We are leader state in logistics, leading state in implementing business reforms. Number of factories you can see, it has gone 3 times since 2003, and it has doubled since 2016-17. Right now we stand at 31,000. So every year, the figures we have given for every year, you can see 23-24, it is 3,200. 24-25, 3,644. 25-26 is a 3,932. We are showing you the land bank that is available. It is spread throughout. Most of you may be familiar with Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway Authority, but the land banks, industrial land bank is spread throughout. You have the Expressway Authority, and we have 27 IMLCs spread there. The land bank of 12,500 acres is there. UPCDA, which is the State Industrial Development Authority, has a land bank of 10,000. The defense corridor, as I said, this has 6 nodes, and you can see those 6 nodes. We have about 5,000 acres there. Bundelkhand, the Bundelkhand Industrial Development Authority, BIDA. The BIDA is being developed, which will be bigger than Noida. It has 56,000 acres. And Yamuna Expressway, already you are aware, it has about 3,300 square kilometers is under notification. It is being acquired. Now we come to the fact that it is said that we are a landlocked state, but that disadvantage is no more. With Honorable CM's direction, as I said, expressways, national highways crisscross the whole state, and with the access of those expressways and with our policies, which subsidizes the freight, you are at any of the largest export hubs in 18 hours or 48 hours. You can see those distances yourself. The freight corridor runs through UP. The western and the eastern freight corridor, they diverge in Uttar Pradesh, near Jewar Airport, near Dadri. And you see 33% of the freight corridor runs through UP. So that is a big advantage that takes you to the ports. 47 stations out of 115 stations of the corridor, that is based in Uttar Pradesh. So that gives us a big advantage. And we are developing a cargo hub near Jewar. These are the priority sectors. You can have a pick. Electronics and IT. You see 200 plus electronics manufacturing companies are operational. 42% of them have been added in the last 20 months. The emerging and upcoming sectors like semiconductors and data centers, we have a presence there already. Global capability centers, Noida is a strong hub. It is an established one, and we are promoting that. We have a specific policy for that. I will be taking you through that. We have a pharma park coming up and a medical device park, pharma park in Lalitpur, in Bundelkhand, and medical device park in Noida. Tourism and hospitality, if you look at the footfall, tourist footfall, it has been growing in UP. If you leave out Kumbh, that is a phenomena. If you leave out Kumbh, about more than 20% growth is there year on year in tourism industry. We already are very strong in textile, apparels and footwear, sports goods production. That is being strengthened. EV automobiles, 14 to 60% of the sale is in Uttar Pradesh. We have defense and aerospace. As I said, 6 nodes are there. BrahMos, the missile, is made in Uttar Pradesh.
Now we have 34 policies. The mother policy and the main policy is Industrial Investment and Employment Promotion Policy of 2022. But I'll restrict myself to 2 policies. You can see on the right side there is a foreign direct investment policy. Anyone who is coming through FDI route, Fortune Global 500, Fortune India 500 companies, they can avail of this policy. The incentives in this policy are land rebate. You get a upfront land rebate. Capital subsidy is there. Stamp duty exemption is there. SGST refund is there. Capital interest subsidy is there. And electricity duty exemption is there. EPF reimbursement, transportation subsidy, R&D incentives, skill development subsidy, they are also part of this. These are the 34 plus sectoral policies which I was talking about. They are the best in the country. We see to it that whatever any state is offering, we include it in the policy. Now I come to what I was talking about, the FDI policy. If you look at it, these are the salient features. And more than that, you can customize it. Any of the concessions or rebates or subsidies that you want, that can be provided under this policy. So you have front-end lab subsidy up to 80%. If it is in Western UP, it is 75%. If it is in other parts, Bundelkhand or Eastern UP, it goes up to 80%. Capital subsidy up to 35% in 7 annual installments. Net SGST refund, 100% stamp duty and registration fee waiver, 100% exemption of electricity duty, green industry incentive up to 54,000 SGD, logistics subsidy up to 43,000 SGD, skill subsidy, training for 500 persons, refund of patent registration fees, grant for setting up of R&D centers or center of excellence, and industrial housing up to 2.15 million SGD. Just as an illustration, we have put in this slide. So if you are coming in and it becomes operational once you invest more than 100 crores. That is 13.93 million SGD. So if you are putting up a unit, say in Noida, Greater Noida, the western part, so you get on land subsidy, you get 75% subsidy. So 75 million SGD is your incentive. Effective cost is 25 million SGD and it is upfront. The capital subsidy is 30%. So 30% is off. Effective cost for you is 70 million SGD. And this can go up to 35% if you put it in another region. And 100%, as I said earlier, 100% is SGST refund, attractive skill development incentives. You get to customize it. You choose the guys who are going to work at your unit and you skill them. 100% exemption in electricity duty, 100% exemption of stamp duty, incentive for setting up effluent treatment plant, land subsidy at the time of allotment. As I said, it is upfront. SGST benefit for a period of 10 years, and electricity duty exemption and skill development subsidy for 5 years. Capital subsidy in 7 equal annual installments. So this is in a nutshell the FDI policy. The next relevant policy that we thought will interest you, though we have 34 policies, but 2 policies we are taking up. The next is the GCC policy. The sector highlights are, we are 6th, UP is 6th position in software exports in India. GCC hub for software and tech sector is already there in Noida, Greater Noida area. We have 6 software technology parks operational in Noida, Meerut, Lucknow, Kanpur, Agra and Prayagraj, serving around 300 registered IT units. 3 parks are under development. Noida has about 14% office space of the country, and that is at competitive metro pricing. Now, under the policy, what we are offering is land subsidy of 30 to 50%, again, depending on the region you are coming in, of capital subsidy. Capital subsidy is 25% of eligible investment up to 25 crores, that is about 5.38 million SGD. Interest subsidy of 5% on loans up to a maximum of 22,000 SGD for 5 years. 100% exemption or reimbursement of stamp duty. OPEX subsidy of 20% on lease, bandwidth, power
up to 17.20 million SGD per year. Payroll subsidy of up to 2,674 SGD per employee per year for 3 years. So this is the SGD policy, the GCC policy. Now, there is a huge potential under tourism, as I said, and we have the Buddhist circuit and famous places, that religious places you have heard, that is there. Ecotourism is another opportunity. For investment facilitation, we have Nivesh Mitra, Nivesh Sarthi, and online incentive management system. So as soon as you are planning to invest, you apply online, and we assign a relationship manager to you. He handholds you. He takes you through the whole process till you set up the unit, and even after that. These are a few of the companies that are with us. And we are also developing an area by the name Singapore City in Yamuna Expressway Authority. And it's about 500 acres, proximity to international airport. As you see, Sector 7, it is just next to the Jewar International Airport. And the land use will be mixed land use with world-class urban planning. 70% will be industrial, 13 commercial, residential 10%, institutions 5%, and amenity 2%. Potential sectors for you would be medical devices, electronics, semiconductors, automotive components, AI and robotics, logistics and warehousing, aviation-linked industries. And we come to the last slide. I'd like to sum up that there is rule of law. Honorable CM sir has ensured that. And the first beneficiary is law and order. And contract enforcement naturally flows from the systemic improvements have been brought in, ease of doing business, deregulation, stronger institutions, and there is no reading between the lines. So there are no fine prints for you. You come in and invest. As I said, population, we have the largest consumer base, 56% in working population, 8,000 higher institutions and technical institutions, 2 lakh STEM graduates, and there is, as I said, a scheme for skilling. Under infra and connectivity, 55% of the expressways, largest railway and road network, 60 domestic and 4 international airports. Jewar International Airport is coming up. National Waterway #1, the first waterway authority is with us. As I said, MMLP is the multimodal logistic park is being developed in the Jewar area. And we have the largest industrial land bank available for allotment. And it is a policy-driven industrialization that we are following, 34 policies, best and ease of doing business, deregulation. We are the front-runner state, the top state, dedicated relationship manager I have talked about, country and sector-focused desks. We have a desk for Singapore. And access, we are all very accessible. Starting with the Honorable CM, you can see his accessibility. You send him a mail and you get an appointment and you meet him.